My dear students, we are discussing fundamental right, freedom of movement and freedom of assembly. In this regard, I am going to discuss with you freedom of assembly and public order. यहाँ पर मैं आपके साथ एक केस है जिसमें यूएस सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है that the very idea of a government, republican in form, implies a right on the part of citizens to meet peaceably for consultation in respect of public affairs. Dear students, the fundamental right guaranteed to the citizen of Pakistan by the Constitution of Pakistan 1973 is to gather unarmed and for peaceful purposes, which can only be restricted by laws which have as their object the maintenance of public order. My dear students, the restrictions imposed must be reasonable. रीजनेबल से मुराद यहां पर है प्रैक्टिकेबल, लॉजिकल और सेंसिबल. And as a matter of fact, my dear students, in each case, it is the court to decide whether the restriction is reasonable or not. अगर कोई restriction freedom of assembly के ऊपर लगती है, तो ये कोर्ट का काम है कि वो डिसाइड करे कि वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो लॉजिकल है या नहीं है. Dear students, in deciding whether the restrictions are reasonable or not, the court will take into consideration the conditions prevailing at the time, the extent and the duration of the restrictions and all the other surrounding circumstances. Freedom of assembly के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगती है और ये बात जो है डेवलप होती है कि आया ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, ये कोर्ट का काम है कि वो डिसाइड करे और ये डिसाइड करते हुए कोर्ट जो है वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखेगी. Dear students, in Abdul Hamid Qadri versus DM Lahore, it was held that the danger to human life and safety and the disturbance of the public tranquility fall within the purview of the expression public order. And if an order is passed by the district magistrate to prevent danger to human life and safety and the disturbance of public tranquility, it is an order passed in the interest of public order. Dear students, public interest में अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है और जिससे रिस्ट्रिक्शन जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर लगती है, तो वो वैलिड है अगर उस रिस्ट्रिक्शन का मकसद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना है.